Hey aspirants, long time no see. I'm a mentor Shaurya Goswami. Welcome back to the Legal Vibe. So, as Clat 2026 journey has already been started, and also Pari has made a video on how to kickstart your Clat 2026. So, what I thought is now you guys need a proper 11-month strategy that whatever you need to do in every month and what should be your focus and everything. See, the thing about strategies is today I'm making an 11th month strategy, and 5 months down the line, I am gonna make an 6 month strategy. Then again, I'm gonna make a 3 month strategy, 1 month strategy, and that's how it is, right? So you always keep on getting strategies for whatever time frame is left. But if you start early, like if you start from now on, you would be needing a 6 months preparation strategy, right? And it's great. The earlier you start, the better it is, and so that's why I am here with the 11-month strategy. And to be honest, this is all you need for preparing your CLAT. Either you are in a coaching or even if you're not. And speaking of not being enrolled in a coaching institute, I'd like to draw your attention to PW CLAT's new courses for CLAT 2026. Either you are a 12th class student or you are a dropper and preparing for CLAT 2026, PW CLAT has got you covered entirely. So a lot of students in CLAT 25 have already achieved the DML by getting enrolled in PW. So then why not you? Right? So PW's first batch is Clat Achievers 2026. In this batch, you are going to get 300 plus hours of live lectures, 200 plus daily practice problems, 20 mock test series for Clat and ALET both, and 7,000 plus questions worth of question bank. This batch was already selling at 21,999, but now you can get it just for 999. Right? How impressive it is. And if you need backup, like if you're preparing for ALET as well as the other 7 OLETs along with CLAT, PW CLAT has got you covered for this also. They have a CLAT Pro 2026 batch. In this batch, you're going to get everything they already proposed in the CLAT Achievers 2026 batch. Plus, you are going to get the access to all the upcoming batches, plus 10 printed modules and 6 years of PYQ book. Plus, they have a Khazana package where they include all the good and best lectures from CLAT 2025 Zenith batch they had. And this batch was actually selling for 29,999, but now you can get it only 14,999. So it's a really good deal. And if you use our code LEGAL legal, you can get 500 extra off. So see, it's a bumper deal. Just go and get enrolled in it and get kick started with the preparation. Coming back to the video, so I'm dividing these 11 months in 4 particular phases. So in phase first, and phase 2 and phase 3 and phase 4, we have different areas of focus, because again CLAT has very different and a lot of elements that you need to focus in your entire preparation. So I've tried that in each phase you can focus on one specific thing which is really important. So to start with, let's go with your phase 1. Phase 1 contains of January, February and March, obviously. So your main focus in phase 1 of your preparation should be reading, because reading is really important. I might have told this to you before also, that in my CLAT 2024 I did my RC, CR and legal, the heaviest reading sections, in like just 70 minutes and I was done with it. It was easy, yes, but a lot of people couldn't do it because they couldn't get a lot of time. And why could I have done it in that particular frame? Because I read a lot. So my reading speed was really good. So your first phase is mainly to improve your reading. So you might go for books, read a lot of books. Seriously, in my first 6 months of preparation, I read like 50 books. So yeah, I'm not asking you to read 50 books, but read some of the books, right? And it is really important that you work on your reading, and it is going to be helpful. If the paper is easy, it's always about how fast you can solve it, right? How fast or basically how accurately you can solve it. So reading is really going to help. And if you can do the reading sections in less time frame, then you have more time for sections like maths, as it takes a lot of time. It actually took a lot of time for me personally. So this is one thing. And second thing, you should start reading newspapers. It is really important, guys. Please start reading newspapers. And newspapers as of now should be your primary GK source for the first phase. Plus you can add your GK compendium. So you might go for any compendium. There are compendiums like Clat Post by Legal Edge and Clat Express by Law Prep Tutorials. Inside information, you get everything on Telegram. So yeah. So what you have to do is newspaper padho, roz. Pick up the newspaper. It also adds up to your reading, as well as it gives you the basic GK ka data, and you can also
फॉर नाउ जस्ट रीड द न्यूज़पेपर. इतना नोटबुक्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, न्यूज़पेपर रीड करो. और न्यूज़पेपर के साथ साथ जब तुम कंपेंडियम पढ़ोगे अपना मंथ एंड में, जब तुम कंपेंडियम पढ़ोगे वहाँ से इफ यू वांट यू कैन मेक सम नोट्स फॉर योर जीके. एंड फॉर द फर्स्ट फेज यू आर गुड टू गो विद दैट is enough by itself. Okay, then the third part is practice. So well, you have to practice, and the thing is you don't really have to do a lot of stuff as of now for practice. If you can just start like weekly, if you solve one sectional of CR or one sectional of RC, one section of maths, one section of legal, it's good enough for you. And mainly in the first phase you have to focus on getting your concepts cleared, right? Practice is not really a concern as of now. For now you have to focus on getting your concepts cleared. Once your basics are clear, you have to practice along with that to polish your basics. So it's a really good start. Then about the mocks, so it is really important, please don't wait to complete your syllabus first, because there is no syllabus for Clat, right? It's everything around there. So start your preparation with your mocks itself. It's really important, to be honest. I started my preparation and with my previous year Clat paper, and I tell this to everyone. If you are starting your preparation, start with your previous year Clat paper. It is very important. So if you are starting a preparation, first mock you should give is Clat 2025, and then you have to give a mock every week. So I hope this is clear. So mainly what we discussed was read a lot, read newspapers, really important, not needed to take notes as of now. And make sure you clear your basics and practice along with that. Not much practice needed in the first phase. Reading is very important again, and you can refer to some kind of monthly GK compendiums to make your notes for GK. And one mock every week is really important. I don't want you कि last में जाके तुम लोगों को ऐसा लगे यार मैंने mocks नहीं दिए, कम mocks दिए, enough mocks नहीं दिए. To be honest, I gave like 99 mocks and my 100th mock was my Clat. So it really helped me. You need to be accustomed to what you're going to do, right? Yeah, so that is for the first phase. So first phase is reading heavy, clearing your concepts and getting familiar with GK and other kind of sections. Then comes your second phase. I hope the first phase is clear. On your second phase, the second phase consists of another 3 months, which are supposed to be April, May and June, if I'm not wrong. So in these 3 months, your main focus should be GK notes. It is important. It is really important. So it is the main focus. So how are you gonna make your GK notes? You don't have to stop reading newspaper, because newspaper remains really important in the second phase also. And make sure you're reading it properly from the reading perspective as well as from the GK perspective. And also what you can do is, now you don't really have to make notes from the GK compendium. What you can do is, when you're reading a newspaper, make sure that you pick out some topics, some important topics, and do your own research and make notes on them. It is really important. You could do it every day, because if you do it every day, it's like 1 or 2 topics every day and it doesn't compile up, right? So it's good for you. And at the end of the month, you can use the compendium to refer to and see what are the topics you did not prepare. So you can add those topics to your notes. So from the first phase, you have your notes from the compendium. In the second phase, you have something from the newspapers, and as well as you have something from the newspaper, as well as something from the compendiums itself. And also, if you are willing to join a coaching, your first phase is the best time to join a coaching. And if you are in a coaching, then in the first phase itself, you don't really have to do much खुद से. What you have to do is, जो चल रहा है कोचिंग में, बस उसी को पढ़ लो और it's enough. बस रीडिंग पे ध्यान दो. ओके. एंड सेकेंड फेज में आपको रीडिंग स्टॉप नहीं करनी. रीडिंग स्टिल रिमेन्स एग्जैक्टली एंड सेम इंपॉर्टेंस इट हैज. सो जितना हो सके रीड करो, बट इस पॉइंट पे बस तुम्हें ध्यान देना है कि तुम रीड कर पा रहे हो ठीक से. मेनली जीके नोट्स आर गोइंग टू बी द फोकस. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस पार्ट में तुम्हें क्या करना है, आई होप कि तुमने अपने बेसिक्स फर्स्ट फेज में क्लियर कर लिए हैं. तो उसके बाद भी देर आर सम टॉपिक्स जो फर्स्ट फेज में क्लियर नहीं हो पाए होंगे, बिकॉज वेल एवरीथिंग इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन. सो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है मेनली तुम उस पर ध्यान दोगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस तुम अपना बढ़ा दोगे. अगर तुम एक सेक्शन दे रहे हो तो तुम 2 सेक्शन देने लगो एक पर्टिकुलर सेक्शन के एक वीक में. सो इट गोज ग्रेट फॉर यू. एंड मॉक तुम्हें अभी भी 1 मॉक वीक देना है. देखो, इससे ज़्यादा मत देना, इससे कम मत देना. इससे कम तो क्या ही दोगे, मतलब 1 मॉक तो देना ही होता है. इससे ज़्यादा मत देना अभी, नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी का फोकस कुछ और है. सो एट द एंड, टू सम इट अप,
सेकेंड फेज में व्हाट यू हैव टू मेनली फोकस ऑन इज योर जीके नोट्स. जीके नोट्स कहाँ से बनाएंगे? न्यूज़पेपर से रोज रोज पढ़ के थोड़ा थोड़ा बना लेंगे नोट्स अपनी खुद की रिसर्च करके, एंड यू कैन ऑल्सो रिफर द कंपेंडियम एट द एंड ऑफ द मंथ. देन उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन रीडिंग. इट इज इंपॉर्टेंट, इट रिमेन्स इंपॉर्टेंट, and you have to read various kinds of stuff, like maybe in the first phase you might be reading stuffs like to begin with, like to get you familiar with reading, you might be reading anything you like, right? Fantasy, fiction, romance, horror, crime thriller, anything. You can read anything in the first phase. But in the second phase, try to diversify your genres, right? You should read something from economics, something from science, something from philosophy, and all of that. Because it helps, right? In the Clat paper, you are not going to have same kind of passages from the same kind of genre, right? You really need to accustom yourself to different kind of genres, and diversified reading is really important for that. And for the practice part, जो कंसेप्ट तुम फर्स्ट फेज में क्लियर नहीं कर पाए थे, उन कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करो, प्लस थोड़े थोड़े दो सेक्शंस एक एक वीक में तुम एक एक सेक्शन के दे सकते हो. ग्रेट. एंड 1 mock a week, that is what it is required. Then I just hope, some people tell me that I speak in 2x. I'm really sorry, that's how I've been speaking all my life, so I can't really help it. But if it works for you, you may slow down the video however it works for you. And also please take notes. It is really important, whatever I'm speaking, please take notes from this video, because that is going to be your 11-month strategy. And I just so wish you actually follow it, because plans तो कोई भी बना लेता है, strategies कोई भी बना लेता है, but you need to follow them to get some results, right? So coming on to the phase 3, I know I'm going a bit fast, but that is how it is supposed to be. It's YouTube, so you can actually adjust to your own speed, and I have to complete the video also, right? Then coming to your third part, what you have to do is, third phase, it consists of another 3 months, which are July, August and September. So when you start with July, or basically July, August and September, your main focus for this particular period is going to be your practice. Hopefully all of your concepts are clear by now, and if anything is left, anything you could not clear and anything you could not learn properly or could not practice properly, this is the time. Your main focus for your phase 3 is going to be your practice. जितना हो सकता है practice करो, जितना हो सकता है practice करो. You might be giving 3 sectionals and 3 sectionals or a sectional every day, however it works for you. I really want you guys to be practicing as much as possible. This is the practice part. And about the reading, again, you don't have to stop to read, because it is important. It stays important, right? Along your preparation, throughout your preparation. So what you have to read is, अब तुमने फर्स्ट फेज में अपना जनरल रीडिंग कर लिया, सेकंड फेज में तुमने डाइवर्सिफाइड रीडिंग कर लिया, अब बट तुमने दोनों फेजेस में तुमने प्रैक्टिस भी करी है, तुमने सेक्शंस भी दिए हैं, तुमने मॉक्स भी दिए हैं, तो तुम्हें पता होगा यार देयर माइट बी सम काइंड ऑफ सेक्शंस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉनर जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स के पैसेजेस तुमको समझ नहीं आते हैं, दिक्कत देते हैं, या फिर देर सम काइंड ऑफ लॉ पैसेजेस, इंटरनेशनल लॉ के पैसेजेस तुमको समझ नहीं आते, दिक्कत देते हैं. एनीथिंग लाइक दैट, फिलॉसफी नहीं समझ में आता, साइंटिफिक पैसेजेस नहीं समझ में आते. व्हाट यू हैव टू डू इज, अब तुम्हें मेनली साइंटिफिक पैसेजेस या फिर कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी है, ऐसी मटेरियल तुम्हें अपने आप को एक्सटर्म करना है कि जो चीज़ें तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है. अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं आ रही तो फ्री इकोनॉमिक्स पढ़ लो, और अगर तुम्हें साइंस से कोई दिक्कत हो रही है तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पढ़ लो. तो बेसिकली आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. यू हैव टू मेक योरसेल्फ मोर फैमिलियर विद द पर्टिकुलर जॉनर्स, सच दैट कि तुम्हें पेपर में फिर वो जॉनर अगर आ जाए, उस जॉनर से कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई पैसेज आ जाए, तो तुम्हें दिक्कत ना है एट द एंड ऑफ द डे. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस इन योर रीडिंग पार्ट अभी के लिए, इन योर थर्ड फेज. एंड प्लस इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे, लाइक दैट इज व्हाट आई एम होपिंग. अगर तुमने फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में ठीक से पढ़ाई करी है, अब तुम जीके नोट्स का क्या करोगे? न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो, ग्रेट. मेनली न्यूज़पेपर से नोट्स बनाओ. अगर तुम किसी कोचिंग में तुम्हें क्लासेस अटेंड करो, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. और न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी मेन सोर्स. न्यूज़पेपर से 1-2 टॉपिक्स तुम उठा रहे हो, और अभी तक तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाने भी आ जाने चाहिए. अगर तुमने पूरे 3 महीने सेकंड फेज में अपने नोट्स बनाए हैं, तो न्यूज़पेपर में तुम नोट्स बना रहे हो, ग्रेट. फिर उसके बाद क्या करें, न्यूज़पेपर में कुछ हाईलाइट नहीं करना होता. यू जस्ट हैव टू पिक आउट द टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें लग रहे हैं, रिसर्च इट अप एंड राइट इट डाउन इन योर नोट्स, ओके. और नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है, एंड ऑल ऑफ दिस. अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट कर दो मेरे को, और हम एक वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर, ठीक है. दिस इज व्हाट इट्स फॉर नाउ. एंड अगेन तुम्हें एट द एंड ऑफ द मंथ एक बार कंपेंडियम से चेक कर लो कि कुछ रह तो नहीं है, कुछ रह गया है तो वहाँ से पढ़ के उसे ऐड कर लो.
एंड मेक श्योर तुम ये पूरे टाइम नोट्स बना रहे हो, बिकॉज नेक्स्ट फेज में तुमको रिविजन करना होगा, और अगर हमारे पास तुम्हारे खुद के नोट्स नहीं होंगे तो भूल जाओगे तुम अपना रिवीजन ठीक से कर पा रहे हो. नॉट पॉसिबल. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक लिटरली आई हैव सीन 3 क्लास cycles, 2022, 23, 24, and now also 25, 25 also 2022, because I started preparing really early. That's how I know it. So notes नहीं है अगर तुम्हारे पास at the time of revision, you're screwed. You are completely screwed. So please make sure you have your notes, GK notes, right? एंड ऑल ऑफ दिस. एंड अब मॉक्स क्या कर रहे हैं? जुलाई में तुम एक मॉक का वीक दो, वर्क्स ग्रेट, वेल इनफ. और चाहो तो अगस्त एंड सितंबर में तुम 2 मॉक्स a वीक दे सकते हो. एक वेंसडे को दे दिया, एक संडे को दे दिया, वर्क्स वेल इनफ. अगर तुम 2 मॉक्स दे रहे हो, इट्स ग्रेट, बिकॉज प्रैक्टिस हो रही है. फिर मेनली अब तुम्हें प्रैक्टिस ही तो करनी है. अगर तुम और दिन सेक्शनल्स दे रहे हो, और तुम 2 दिन सेक्शंस दे रहे हो, 2 दिन मॉक्स दे रहे हो, 3 दिन सेक्शन दे रहे हो, 2 दिन मॉक्स दे रहे हो, इट्स ग्रेट. इट्स यू आर रियली गुड टू गो, बिकॉज इस पॉइंट पे तुमने सब कुछ पढ़ लिया है. मेनली यू हैव टू प्रैक्टिस वट एवर इज रिमेनिंग, राइट? दिस इज योर थर्ड फेज. मेनली क्या फोकस रहेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. 2 मॉक्स अ वीक यू कैन गिव अगस्त सितंबर में. एंड उसके बाद रीडिंग करनी है तुम्हें, जो पर्टिकुलर जॉनर्स में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है. यू कैन रीड आर्टिकल्स, यू कैन रीड बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वट एवर वर्क्स फॉर यू. This is mainly your third phase, how it's gonna be, and you have to keep on reading the newspaper, obviously. So coming on to the fourth phase, and to be honest, it is one of the most important phase. I know all of the phases have the equal importance, but fourth phase is why it is important, because it's just 2 months to your exam. So yeah, fourth phase is your October and November, and I guess as the trend is, the exam will happen in first week of December, so you don't really have a lot of time in December itself to prepare. So you have your October एंड नवंबर. बट वॉट यू हैव टू डू नाउ इज, अब तुमने 3 फेजेस, तुमने 9 महीने मस्त बैठ के नोट्स बनाए हैं जीके के. अब द टाइम इज टू रिवाइज देम, राइट? तो उसके लिए एक बार तुम एक कर सकते हो. थर्ड फेज खत्म होते होते मैं सारे के सारे जीके नोट्स कंपाइल करना स्टार्ट कर देना, ताकि तुम फोर्थ फेज में अक्टूबर से सीधा रिवाइज करना स्टार्ट कर सको. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुमने रिवाइज करना टाइम से स्टार्ट कर दिया तो तुम 1 से 2 रिविजन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो या इट्स गुड. दैट्स हाउ यू हैव टू डू योर जीके. एंड ऑल्सो नवंबर की नवंबर मिड के बाद तुम न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर सकते हो. रीडिंग बंद नहीं करनी है. यू रियली हैव टू रीड. जितना हो सकता है रीड करो. रीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो विद इट. और कंपेंडियम से करते रहो रिलेट अपने जीके के नोट्स, वहाँ से टैली करते रहो. दैट इज व्हाट आई एक्चुअली टोल्ड यू पहले भी, बाकी सेक्शंस, बाकी फेसेस के लिए. एंड अगर कुछ भी ऐसा रहा है तुम्हारे पास अभी तक कि तुम नहीं कर पाए हो, मैथ्स का कोई टॉपिक है या कुछ भी है, प्लीज़ गेट इट डन इन अक्टूबर. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर तुमने आगे के लिए छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ओके, गो विद इट. एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मॉक्स तुम 2 से 3 दे सकते हो, हाउएवर इट वर्क्स फॉर यू. बेसिकली में प्रैक्टिस करनी है तो 3 दिन सेक्शंस दे दिए, 3 दिन मॉक्स दे दिए, 1 दिन तुमने छुट्टी ले लिया, 2 मॉक्स दे दिए. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. बट ये कि यार 3 से ज़्यादा मॉक्स मत देना, नॉट हेल्पफुल. एंड 3 मॉक्स मैक्सिमम. चाहो तो 2 से 3 मॉक्स दे सकते. 1 मॉक बहुत कम हो जाएगा, तो उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है. नवंबर के टाइम पे आते आते रिवीजन जीके का इज योर मेन फोकस. ऑब्वियसली योर सेकंड रिवीजन होपफुली, अगर तुमने अक्टूबर में फर्स्ट रिवीजन कर लिया. एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी फोकस. और अगेन लाइक एग्जाम के आते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा, वी आर गोइंग टू मेक मोर वीडियोज ऑन इट. बट फॉर नाउ, जस्ट टू गिव यू अ क्लियर रोड मैप, आई हैव लिस्टेड आउट ऑल दीज 4 फेजेस. फोर्थ फेज में तुम्हारा मेन फोकस क्या है? जीके के नोट्स, बेसिकली जीके का रिविजन तुम्हारा मेन फोकस है. तो फर्स्ट फेज में योर फोकस वाज रीडिंग, सेकंड फेज में योर फोकस वाज जीके नोट्स, थर्ड फेज में योर फोकस वाज प्रैक्टिस, एंड फोर्थ फेज में योर फोकस इज जीके रिविजन एंड बेसिकली योर मेंटल हेल्थ. आई होप दिस स्ट्रैटेजी वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड कुछ भी तुम्हें कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कर दो, तो मेरे को इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हो, हाउएवर इट वर्क्स फॉर यू. और कोई और वीडियोस चाहिए तो बताना. एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग अप विद इज बेसिकली माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, हाउ वाज इंटर्नशिप एंड हाउ वाज सेम 1 एंड एवरीथिंग. So you can stay tuned for that. It's fun to watch all of this while you're preparing for Clat. And yeah, so that's all for now. Hopefully you enjoyed it and kind of took notes. And also I wish you might not be coming back for the 6-month strategies video, because you'd be doing this properly. So have fun guys. Until the next time, sayonara.